Assalamualaikum. This is your course instructor, Mr. Kaifal, and today the topic that you are going to learn is project risk management. Uh, First of all, I am going to tell you what is risk or what you people consider as risk. If it would be a live class or if it would be a regular class, I might be getting answer from you people. But now due to current situations, this would not be possible badly, and both the sides are really missing the situations of our classrooms and the student-teacher relationship and the bi-directional communication for sure. But now because communication is unidirectional and we are supposed to tell you each and everything from our side, what we consider important or what we consider that our students are not able to reach to that point. We think that we have to elaborate that point or the whole syllabus. But you people are always welcome, as I told you many times, that you are welcome to ask any question. But for asking the question, the first thing you have to do is to listen these audios or videos. And I'm hoping that you people are getting time from your routine schedules or house chores, and then making up a schedule to listen to these videos that your teachers are definitely working really hard on that and making videos for you people this within this holy month of Ramadan and within this bad situation globally. And we people are making efforts, and we wish that our students are definitely make effort to learn the topics by heart and to make a proper understanding and to get ready for the semester work also. So, if I say the semester work or the relation assignments and quizzes, if I consider the situation or the scenario, then it would be a threat to majority of the students to complete the task, to complete the quizzes, to complete the session assignments on time. And if they are not going to complete that assignment or that task at at the given time, then they are supposed to have a risk, and that risk would probably be that they are going to have less marks in their session, or they are going to have a low SGPA, or the target of dedicated GPA is not going to be reached. So that would be the risk according to the student side. Similarly, if you are going to have a project, for example, if you are going to have a final year project, and you all people know that your final year projects are going to have six credit course importance, and then you people are going to have very high marks for that final year project. And if you people are not considering your FYPs as important as it would be, then there would again be a risk, a potential risk, problem that you will not pass your degree without having your BS degree, without having your project done, and without having a specific marks of that, or a specific grade of that project. So I guess that you people can relate to the risk very easily. So according to this definition that has been given on your screens, a risk is a potential problem. It might happen, but it might not. The risk is something, a probability. This is probable that you are going to have a risk, and this is also probable that you are not. So a risk is anything that you can say, you cannot say before time that
is going to be happen. There is any kind of threat. You cannot say in advance that this threat is going to be happen really soon, or this threat is going to be happen within this month or this year. So that is something, the probability that may occur and that might not. Conceptual definition of risk would be: risk concerns future happenings. For sure, risk is about the future. Risk is about the thing that is going to be done very soon. So it's something that is going to be happening near future. Risk involves change in mind, opinion, actions, places, etc. There would be any reason that may cause any kind of risk. There would be any change of your thinking pattern. There can be any change of the environment. Like we are listening these days on media that there is a risk of spreading this COVID-19, and that is something that the risk that this COVID-19 will spread uh, devastatingly in Pakistan, or it would not. It is just a probability. It's just a matter of analysis. It's just something that you can predict. So risk involves choices and the uncertainty that choices entails. So yes, in future or in your lives, you have to take certain steps. So you have to take certain. You have to choose certain choices. You have to choose from the given choices. And after choosing that choice, you are uncertain that which kind of risk that choice is going to carry to you. For example, you have chosen the course BSIT when you were doing or when you've done with your FSC or ICS. So many of you may probably be thinking of any other discipline, any other domain that is convenient for you to handle or that would be convenient for you to study. So there were certain options, there were certain choices. You are doing bachelor's in IT. Majority of the people are doing bachelor in computer sciences, in software engineering, in food nutritionist, in gender sciences, in biology, in botany, in mechatronics, in electronics. So there are certain choices. And when you are going to choose a given choice, you are going to choose from the given choices. Now you have to face the risks that are coming with those. Risk involves choices and the uncertainty that choices entails. So, what kind of risks can be if you are going to choose any kind of discipline and kind of domain to study? For example, आप अगर फूड न्यूट्रिशनिस्ट या आप कोई फॉर एग्जांपल आप चूज कर लेते हैं कोई भी एक सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आप चूज कर लेते हैं बॉटनी तो देयर वुड बी अ रिस्क कि आपके पास इसके रिलेटेड कितने इदारे या कितने इंस्टीट्यूट हैं जो कि इस सब्जेक्ट को परस्यू करते हैं और अगर आप इस सब्जेक्ट को परस्यू करते हैं तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि यू आर गोइंग टू गेट अ गुड जॉब or you are going to have good business or you are going to have something in market for you to do. So there can be many kind of risks if you are going to choose any kind of subject. This is not related to botany even. It can be IT, it can be CS. So it's totally your choice. When you have certain choices, when you have certain points, options, you have to choose one. And when you choose one, then you are willing or you are going to face or you should have to be ready to choose any kind of risk with that. Two characteristics of risk. First characteristic is uncertainty, and the next one is loss. Uncertainty is what? As I have told you,
That a risk is something probable, that there is a probability that the risk might occur or the risk might not occur. So it would be uncertain. The risk may or may not happen. That is, there are no 100% risks. Those instead are called constraints. Now, constraints are not risks. Constraints are basically limitations, the regulations that you should have to face while you are going to choose a path. So constraints are not risks at all. Loss. Point number two, or characteristic number two is loss. The risk becomes a reality and unwanted consequences or losses occur. पहले उसने ये बात बोली कि आपका रिस्क अनसर्टन है। दैट मीन्स कि आपका रिस्क आ सकता है और नहीं आ सकता। पॉइंट नंबर टू पे उसने ये बात बोली कि आपके पास अगर रिस्क आ जाता है तो आपके पास ये चांसेस हैं कि बहुत सारा डेटा या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी अनवांटेड जो कि आप नहीं चाहते कि हों, या बहुत सारा डेटा जो है वो लॉस होने के चांसेस होंगे। तो ये दो तरह के करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अकर कर सकते हैं, और ये करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये रिस्क के करेक्टरिस्टिक्स हैं। रिस्क की कैटेगरीज हैं आगे। पहले है आपके पास प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क और बिजनेस रिस्क। ये है एक अप्रोच नंबर वन के अकॉर्डिंग कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क ये हो सकती है। प्रोजेक्ट रिस्क क्या है? दे थ्रेटन द प्रोजेक्ट प्लान। Now for sure project risks हैं तो they are related to projects. तो project से related है तो they can target your project plans. As you all know that project plans are basically the initiation of your project. So if you are going to have any kind of risk, that means you are going to have that risk or the consequences of that risk at the initiation phase of the project that is planned. Or number two, if they become real, it's likely that the project schedule will slip and that cost will increase. Now for sure, अगर project plan के अंदर किसी भी तरह का कोई threat आता है तो और फिर उसके बाद आपको ये पता चलता है कि वो threat real हो गया, मतलब कि वो काम हो गया जिसका डर था, जिसका threat था, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट के schedules आगे पीछे होंगे और उनके आगे पीछे होने की वजह से आपका प्रोजेक्ट की टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट मैनेजमेंट और मे बी समहाउ दी अदर आपके प्रोजेक्ट के इंटीग्रेशन मैनेजमेंट वगैरह सारे के सारे उसके साथ डील होंगे या उसको जो है वो उन पे असर पड़ेगा, उनको फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क आर टेक्निकल रिस्क। दे थ्रेटन द क्वालिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी प्रोड्यूस्ड। नाउ फॉर श्योर अगर टेक्निकल रिस्क हैं तो फिर आपके सॉफ्टवेयर हैं, ये जो आपके टूल्स हैं आपके प्रोजेक्ट के, उनके ऊपर कोई ना कोई रिस्क है। अब वो क्या रिस्क है? हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी लो हो जाए या हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट टाइम पे ख़त्म ना हो। अब ये रिस्क है जो कि टेक्निकल रिस्क के अंदर आते हैं। If they become real, implementation may become difficult or impossible. और अगर इस तरह से टाइमलीनेस के, स्कोप के, क्वालिटी के, बजट के इश्यूज आ जाते हैं तो आपके पास जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, मतलब उसका प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा और प्रोजेक्ट के ऊपर और आईटी प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसका मतलब है टेक्निकल रिस्क। बिजनेस रिस्क। नाउ दे थ्रेटन द वायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ट। मतलब आपके पास जो आपके सॉफ्टवेयर के बिल्ट होने की जो उसके चांसेस हैं वो अगर आपके थ्रेटन है तो आपके पास बिजनेस रिस्क है। तो श्योर आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर के जो की पॉइंट्स हैं, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो सक्सेसफुली रन नहीं कर रहे। If they become real, they jeopardize the project or the product. और अगर आपके ये वाले रिस्क हो गए, अक्कर हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके प्रोजेक्ट को या आपके प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। ये उनके लिए हजार्डुअस है, डेंजरस। नाउ अप्रोच नंबर वन की ही कैटेगराइजेशन फर्दर है बिजनेस रिस्क की, और इस बिजनेस रिस्क के अंदर आ जाते हैं आपके मार्केट रिस्क,
strategic risk, sales risk, management risk, and budget risk. First thing first, market risk. Building an excellent product or system that no one really wants. मतलब अब आपने बिजनेस रिस्क पढ़ने हैं और आपने उसके अंदर पढ़ा मार्केट रिस्क, मतलब कि आपके पास मार्केट किस तरह की है, इस तरह की प्रोडक्ट्स की है जो कि आप बना ही नहीं रहे हैं। मतलब आप जिस तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे हो वो मार्केट को नीडेड ही नहीं, तो फिर आपका बिजनेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट रन नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो आपके पास रिस्क आएगा वो मार्केट रिस्क होगा। पॉइंट नंबर 2 या सब कैटेगरी ऑफ बिजनेस रिस्क नंबर 2, दैट इज स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है? बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट नो लॉन्गर फिट्स इनटू द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी। आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि आपके बिजनेस स्ट्रेटजी, कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी के ऊपर फिट ही नहीं करते हैं। मतलब आपके कंपनी के एम्स और जो ऑब्जेक्टिव है या जो गोल्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। अगली चीज़ है सेल्स रिस्क। बिल्डिंग अ प्रोडक्ट विद अ सेल्स फोर्स डजंट अंडरस्टैंड हाउ टू सेल। आपको पता है कि आपका एक पूरा सेल्स डिपार्टमेंट होता है। आप इस तरह की प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट आप बिल्ड कर रहे हैं, आपका सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो उस प्रोडक्ट को सेल करने में नाकाम है, उसको मार्केट करने में नाकाम है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर भी अगर आपने प्रोडक्ट बिल्ड कर ली है लेकिन आपका सेल्स डिपार्टमेंट उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, तो द रिस्क दैट केम इनटू बीइंग ए सेल्स रिस्क। द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट रिस्क। Losing the support of senior management due to a change in focus or a change in people. अब मैनेजमेंट रिस्क क्या आया कि आपके जो बिजनेस है उसके अंदर जो आपके सीनियर्स हैं, आपके एग्जेक्टिव्स हैं, उनकी सपोर्ट ख़त्म हो गई है और ये सपोर्ट किसी भी वजह से ख़त्म हो सकती है। अब वो चाहे आपके जो ग्रुप है उसमें चेंज है या आपका फोकस पॉइंट चेंज है, तो कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो वजह बन सकती है मैनेजमेंट रिस्क की। लास्ट सब कैटेगरी ऑफ बिजनेस रिस्क है बजट रिस्क। लूजिंग बजटरी और पर्सोनल कमिटमेंट। आपने जो आपका बजट है, ये जो आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट है वो आगे पीछे हो गई है, वो कम ज़्यादा हो गई है। उसके कम ज़्यादा होने की वजह से जो रिस्क आपके पास आ रहा है वो आपका बजट है।